Hello, my dear children. Welcome back to the Technology series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing Maths Class 4. Children, this is your book, Joyfull Mathematics. So let's start a new chapter today. This is chapter number 6 of your book, and the name of the chapter is Multiplication. Mrs. Sharma has 45 students in the class. उनकी क्लास में 45 बच्चे हैं. Every day she gives one sweet to each child. हर दिन वो क्या करती है, हर बच्चे को एक एक टॉफी देती है. How many sweets does she give? कितनी टॉफीज वो देती है? If the school is open 6 days a week. So रोज एक टॉफी देती है 45 बच्चों को. तो पहले दिन उन्होंने 45 टॉफी दी, फिर दूसरे दिन उन्होंने 45 टॉफी दी, फिर तीसरे दिन 45 टॉफी दी, थर्सडे को भी 45, फ्राइडे को भी 45 और सैटरडे को भी 45. जब हम इन सबको प्लस करते हैं तो आंसर आता है 270. तो अब इस बार बार 45 को प्लस करने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 45 क्योंकि 6 टाइम्स लिखा है तो हमने 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो यहाँ पे जब हम 45 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल कम एज 270 sweets. So you have discovered that multiplication is quicker than repeated addition. So इससे क्या पता चलता है कि एडिशन हम करें उससे बेहतर है मल्टीप्लिकेशन करने, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है और क्विक है. क्विकली हम किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं. So the cost of each item is given here. यहाँ पे कुछ चीज़ों के कॉस्ट दिए गए हैं. 65 रुपीज़ का 7 टॉयज हैं, उनका कॉस्ट बताना है आपको. 38 रुपीज़ के 3 हैट्स, 38 रुपीज़ का एक हैट है तो 3 हैट्स कितने के हुए. 18 रुपीज़ का एक बॉल है तो 9 बॉल्स कितने के हुए. या 0.75 के 1 पेंसिल है तो 15 पेंसिल कितने के हुए. तो क्या करना है, आपको इनकी कैलकुलेशन यहाँ पे बतानी है. सो लेट्स कैलकुलेट इट. 65 रुपीज़ का एक है तो 7 हो गया. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 35 एंड अगेन 7 को अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आंसर आएगा 42, 43, 44, 45. सो द आंसर विल बी 455 रुपीज़. सो ये जो 7 टॉयज हैं वो 455 रुपीज़ के हैं. सिमिलरली लेट्स डू दिस वन. 18 रुपीज़ का एक है तो 9 बॉल्स कितने के होंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव टू डू इट. 9 8 करेंगे हम, इट्स 2, नेक्स्ट 9 1 9 and 7 16. So the answer is 162 rupees. So in class 3 we have learned the multiplication of one digit number by a one digit number. Hence here we shall extend the same idea for multiplication of larger number by one digit, two digit and three digit. So we know that in multiplication sum the number to be multiplied is called multiplicand. जिससे multiply करें उसे multiplicand कहते हैं. And the number by which we multiply is called multiplier. और जिससे multiply करते हैं उसे multiplier कहते हैं. And the result of multiplication is called product. और इन दोनों का जो result आता है, जो answer आता है, उसे हम product कहते हैं. So यहाँ पे multiplicand है this number, multiplier है the next number, और जो answer आया that is the product. Now let's learn some properties of multiplication. Property of 1. When a number is multiplied by 1, जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, the product of the number is 1. It's that number itself. So product क्या है उस नंबर का, वही same नंबर आएगा. Properties of 0. When a number is multiplied by 0, the product is always 0. जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा. Commutative property of multiplication. A change in the order of two numbers does not change the product of the two numbers. जब जो है किसी दो नंबर के ऑर्डर में चेंज नहीं होता है तो क्या करता है, वो उसके प्रोडक्ट को भी चेंज नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल
75 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 150. जब हम इन दोनों के ऑर्डर को चेंज करते हैं विच मीन्स 2 मल्टीप्लाई 75 तो भी ये 150 ही रहेगा. दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Next is associative property of multiplication. A change in the grouping of three numbers does not change the product of three numbers. So in numbers के group में अगर change है तो उससे जो है क्या होता है प्रोडक्ट जो है इन तीनों नंबर का चेंज नहीं होता. सो हमने पहले ग्रुप बनाया 10 मल्टीप्लाई 5 और आंसर आया 50. अब इसमें हमने 60 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 3000. सिमिलरली हमने अब 5 और 60 का ग्रुप बनाया है तो उनको अलोन रखा है तो 10 मल्टीप्लाई 300 इज 3000. अब हमने क्या किया है 10 और 60 का ग्रुप बनाया है. सो जब भी हम जैसे भी ग्रुप बनाए आंसर विल बी द सेम. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है व्हेन वी ऐड 30 plus 3 and it is multiplied by 10 the answer is 330. सिमिलरली अगर हमने 30 को 10 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मीन्स 30 मल्टीप्लाई 10 कर दिया प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 कर दिया दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग कॉलम्स में the answer will be the same. So this is the distributive property. Now let's do this exercise 6.1. Use the rules of multiplication to fill in the blanks. So blanks को fill करेंगे. So any number multiplied by 0 will be 0. Now any number, this number is already written. So what number we have to multiply is 21721. Similarly, let's do this F part. These and this are the same. 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए. So we are going to multiply 1 here. Next, let's do this H question. 19, 6 and 3 lakh 21,000. Here also 3 lakh 21,000 is written. 6 is already written. So we have to write here 90. Now let's learn multiplication by 10, 100 and 1000. So क्या है इन तीनों का multiplication? To multiply a number by 10, put a 0 to the right of the number. So अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 लगा दो उसकी नंबर के जस्ट पीछे. सिमिलरली हमने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया लास्ट में एक 0 लगा दिया. किसी भी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 लगाने क्योंकि इसमें 2 zeros होते हैं. सिमिलरली हमने 165 को भी 100 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे फिर 2 0 लगा दिए. To multiply a number by 1000, किसी नंबर को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है 1000 के 3 0 उस नंबर के बाद लगा देना है. सिमिलरली 416 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 416 and 000 which is 4,16,000. So this is the multiplication property of 10, 100 and 1000. Now multiplication by the multiples of 10, 100 and 1000 and 1000. So अब इनके multiples को कैसे यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल 74 मल्टीप्लाई 4 दिया हुआ तो अब हम क्या करेंगे 0 को हटा देंगे. अब हम 74 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 मीन्स 10 को अलग कर देंगे. सो जब हमने 74 को 4 से मल्टीप्लाई किया द आंसर इज दिस. अब हम 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे एक 0 ऐड कर. Similarly, another example is given here. अब हमें 400 को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे 100 को अलग कर देंगे और 4 को अलग कर देंगे. So अब हमने 4 से 125 को मल्टीप्लाई किया और लास्ट में 100 के 2 zeros में ऐड कर दिए. So यहाँ पे आंसर आ गया 50,000. Another example is given. 49 को हमने 5000 से मल्टीप्लाई करना तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. So मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इज दिस और 1000 के जो 3 0 थे वो 3 0 यहाँ पे लगा देंगे. So answer will be this. What we should remember? We should remember that when we multiply a number by a multiple of 10, जब किसी नंबर को हम 10 के 100 के या 1000 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं we multiply the number by the given of this. Then put 1, 2 or 3 zeros to the right of the product. प्रोडक्ट के हमेशा लास्ट में हमें ये 0 लगाने होते हैं. Now let's do this exercise 6.2. So let's see the first question what's written here. Fill in the blanks.
सो 67 से हमें 10 मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करेंगे 67 के बाद 10 लगा देंगे। सिमिलरली 486 लिखेंगे और 100 के 2 0 लगा देंगे। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। लेट्स डू दिस वन। 79 में हमें 100 मल्टीप्लाई करना, 79 लिखेंगे और 2 0 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट 19 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 19 में 3 0 ऐड कर देंगे क्योंकि 3 0 है इसमें। सो इट्स 19,000। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब हमें 7 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे 7 2 करेंगे, 7 2 40 और कितने जीरो थे वो तीनों जीरो यहाँ पे हम ऐड ऑन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लेट्स डू दिस वन बी पार्ट। 4 को हमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8 एंड 4 1 4। कितने जीरो थे 3, वो लगा देते हैं। क्लियर? अब हम इस एफ को करके देखते हैं। 7 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, तो कैरी चला गया। अब 7 1 7, अब उसमें हम प्लस करेंगे 4, सो आ गया आंसर 11। कितने जीरो थे 3, तीनों लगा देते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। द आंसर इज 1,19,000। Now let's move on to question number 3. See how quickly you can find the answer. चलिए देखते हैं कैसे कितनी जल्दी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 8 4 0। सिमिलरली एफ में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 2 10, 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7। कितने जीरो थे वो जीरो लगा देते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली लेट्स डू दिस वन। 5 से हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20, 2 कैरी, 5 8 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 7 35 प्लस 4 which is 39। अब कितने जीरो थे 3 0, वो लगा देते हैं। इस बात पे ध्यान देना है कि जीरो हमें लगाना है और कैसे लगाना है। सो दिस इज आवर आंसर 39,20,000। So similarly children, you have to do the rest of the questions that we have left. Now let's do this fourth question, multiply and find the product. Product find out करना है, तो क्या करना है, जितने जीरो है उन्हें छोड़ देते हैं, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 1 2 and 2 3 6। कितने जीरो छोड़े हमने, 1 2 and 3, ये तीनों लगा देते हैं। डन। नाउ लेट्स डू दिस वन। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को छोड़ देते हैं। सो 12 1 12 और 12 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। सो द आंसर इज 24। अब कितने जीरो छोड़े थे, 1 2 3, ये तीनों जीरो लगा देते हैं। सिमिलरली लेट्स डू दिस वन। सो 5 6 30 एंड 39 कर लेते हैं, 3 9 27। अब कितने जीरो छोड़े, 1 2 3, 1 2 3 लगा देते हैं। सो हियर द आंसर इज 27 and 4 zeros, 2,70,000. Clear? Now let's learn what is multiplication by 2-digit number. So multiplication 2-digit number का पढ़ेंगे। We have already learned to multiply 2-digit number and the 3-digit numbers. Let's now learn multiplication of larger number. So बड़े numbers के multiplication पढ़ेंगे। 3-digit number and 2-digit number. यहाँ पे 3 digit है और यहाँ पे है 2 digit. So कैसे इन्हें हम multiply करते हैं, let's learn. So here the question is 316 को हमें 87 से multiply करना है, तो कैसे करते हैं, let's see. तो पहले हम क्या करेंगे,
7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के सारे नंबर्स को जैसे हम करते हैं. So 7 6 you can see पहले हमने 7 से 316 को मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद 316 को 8 से मल्टीप्लाई किया है. So जब हमने 7 से इन सब को मल्टीप्लाई किया है तो दिस इज द आंसर दैट वी गेट. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वंस प्लेस है वहां पे एक जीरो लगाना है. ओके, अब इसके बाद जो भी आंसर आएगा 8 6 वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर 8 1 वो यहाँ लिख देंगे, फिर 8 3 उसे यहाँ पे हमने लिख दिया. अब इन दोनों को, ये जो नंबर्स हैं इन दोनों को हमें ऐड कर देंगे. सो ऐड करने पे दिस इज द आंसर. Similarly, we can do the 4-digit number and 2-digit number multiplication. So 4-digit number भी यही सेम करना है. 7 से पहले हमें ऊपर के सारे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं और यहाँ लिखने हैं. अब नीचे वंस के प्लेस पे एक जीरो लगाना है. अब 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है. इन दोनों को हमें प्लस कर देना है. So this is the answer that we get. मल्टीप्लीकेशन बाय 3-digit नंबर. सो अभी हमने पढ़ा था 2-digit नंबर से मल्टीप्लीकेशन. अब हम कर रहे हैं 3-digit नंबर से मल्टीप्लीकेशन. सो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है 693 मल्टीप्लाई टू 19. सो जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हम पहले 9 से तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया. सिमिलरली 1 से अब हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो लगाने के बाद और यहाँ लिख देंगे. जब हम थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 जीरो लगाते हैं. वंस और टेंस दोनों जगह पे 2 जीरो लगाते हैं. उसके बाद हम 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं. जो तीनों हैं इन्हें हम ऐड कर देते हैं. सो जब हमने ऐड किया तो दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट. ये नंबर हमें मिला. सिमिलरली हमने यहाँ पे भी किया 4-digit के केस में. 3 से पहले हमने इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया. अब जब हम अगले नंबर से टेंस वाले प्लेस से करते हैं तो हम टेंस से ही लिखना स्टार्ट करते हैं. वंस वाले प्लेस को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं. ठीक है, तो जब हमने 2 से इन सबको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया. उसके बाद जब हम 100 प्लेस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वंस और टेंस दोनों प्लेसेस को छोड़ देते हैं. हम 100 प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं. तो जब हम 4 2 किया तो 8 हमने यहाँ लिख दिया. 4 6 किया तो फिर यहाँ लिख दिया. तो हमने अपने पूरे मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिख के इन तीनों नंबर्स को प्लस करके यहाँ पे हमें आंसर मिल गया. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 6.3 like this. So you have to multiply the following numbers by 2-digit number. So हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. So 6 2 is 12, 1 carry. 6 3 18 plus 1 19, 1 carry. 6 5 6 30 plus 1 31. Now 3 carry. 6 4 24 plus 3 27. So ये नंबर मिला हमें. अब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 वंस के प्लेस पे है तो हमें टेंस के प्लेस पे तो हमें वंस के प्लेस पे एक जीरो लगाना है. 4 2 8, 4 3 12. So 1 carry. 4 5 20 plus 1 21 and 4 4 16 plus 2 18. अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं. So here it will come to now 8 plus 9 17 2 3 4 7 plus 1 8 8 9 10 and it will be 2. So here the answer is 2,08,472. Similarly children, let's do this next question and the rest you have to do on your own. Let's do it here. 7214 multiplied by 21. हम B पार्ट कर रहे हैं.
and C and D you have to do by yourself. So 5 fours are 20, 5 ones are 5, 6, 7, 5 twos are 10, 5 sevens are 35, 36. नेक्स्ट हियर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 कौन से प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे, तो वंस के प्लेस पे हमें एक 0 लगाना है. सो 2 फोर्स आर 8, 2 ones are 2, 2 twos are 4 and 2 sevens are 14. अब हम इन्हें प्लस कर देते हैं. सो जब हमने 0 को प्लस किया 0 आया. 7 plus 8 is 15. 2 plus 1 is 3, 6 plus 4 is 10, and 4 plus 4 is 8, and here it will come 1. So here the answer is 1, 8, 0, 3, 5, 0. So children, like this you have to complete the rest of the questions on your own. These all questions you have to do on your own. So children, let's do this question number 2. Multiply the following by 3-digit numbers. So यहाँ पे 3-digit number दिए गए हैं, हमें इसे multiply करना है, and the groups are already made here. Let's multiply it. Here 1 ones are 1, 1 nines are 9, 1 threes are 3, and 1 sevens are 7. Now अब जब हम टेंस डिजिट मीन्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के सारे नंबरों को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के नीचे एक 0 लगा देंगे और टेंस प्लेस से हमें लिखना स्टार्ट करना है. सो 9 ones are 9, 9 nines are 81, 8 will be carried forward, 9 threes are 27 and plus 8, 35. Now 9 sevens are 63 and here it will be 66. Next 2. अब जो है जब हम 2 से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 is at 100 प्लेस, सो हमें भी नंबर्स को 100 प्लेस से लिखना स्टार्ट करना, तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे. 2 ones are 2, now 2 nines are 18, 2 threes are 6 plus 1 7 and 2 sevens are 40. अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे. सो जब हम ऐड करेंगे इट विल बी 1. नाउ 8, 1 carry. Now 3 plus 1 4 plus 1 5 and 6 7. Next 5 plus 8 13 and 13 plus 7 20. 2 carried. Now 6 plus 2 is 8 and 7 plus 8 is 15. 1 carried. 4 plus 1 5 and the answer is, so children, here when we added all these three numbers, we got the answer 2150781. So the answer is 2150781. So similarly, let's do this second part. So here, when we multiply 6 with 0, it will be 0. 5 6 are 30. And 6 2s are 12 plus 3, 15. 6 1s are 6 plus 1 7. So ये आंसर हमारा आया. अब हम 3 से जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हमें एक 0 लगाना है, बिकॉज 3 जो है टेंस की प्लेस पे है, तो 3 0s are 0, 3 5s are 15,
Now 3 2 the 6 plus 1 7, 3 1 जा 3. अगेन अब 1 से 0 को हमने मल्टीप्लाई किया, उससे पहले हम 2 0 लगा दें क्योंकि 1 है 100 की प्लेस पे, सो हमें 100 प्लेस से लिखना है. तो 1 0 से 0, अगेन 5 1 5, 2 1 2 and 1 1 1. Now let's add all these numbers. So it will be 0 0 0, 1 carried. Next 14 plus 15 and 15 plus 5 is 20, again 0, 2 carried. 3 plus 2 plus 2, so it will be 7. Now 1 will come. So this is the answer, children. Like this we have to do the rest of the question. Now let's move on to question number C here. Here the number is 3428 multiplied by 329. So let's multiply it. So let's read the table of 9 first. So 9 8s are 72, 9 2s are 18 and plus 7 25, 9 4s are 36 plus 2 37 38. Now 3 9s are 27 plus 3 is 30. Now let's multiply this 2 with 8. So before that let's apply a 0 here. यहाँ 0 लगाएंगे. 2 8s are 16, 1 carry, 2 to the 4 plus 1 5, 2 4s are 8, 2 3s are 6. नेक्स्ट अब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 2 0 लगाना है पहले, क्योंकि 3 100 की प्लेस पे है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 100 प्लेस. सो 3 8s are 24, 3 2 the 6 plus 7 8, 3 4s are 12, 3 3s are 9 plus 1 10. Here it is 2. Now children, let's add it. 18. Next 8 plus 8, 16 plus 1 17. 6 plus 3 plus 1 10 plus 2 12. It will be 1 and then 1. So here children, the answer is 11,27,802. So similarly children, you have to do the rest of the questions on your own. Now let's move on to the third question. Here you have to multiply by regrouping them. So numbers दिए गए हैं, आपको इनके groups बनाने हैं and then you have to multiply it. So here the first number is 648 multiplied by 27. So let's do it. So children, when we did this multiplication, जब हमने multiply किया 648 को 27 से, so हमने क्या देखा, जब हमने 7 से सबको मल्टीप्लाई किया so the answer came 4536. अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने क्योंकि 2 10s के प्लेस पे, so 1s के प्लेस पे हमने 0 लगा दिया and then we multiplied it. So आंसर आया 17496. So children, this is the answer of this question. Now let's do the next question here. Next question के लिए let's do it here. The next question is multiplied by 45. So जब हमने 5 से इन सबको मल्टीप्लाई किया, so the answer is this. Now let's multiply with 4. 4 5s are 20, 2 carry, 4 5s are 20 and 2 22, 2 carry, 4 5s are 20 and 2 22, carry, 4 1s are 4, 5 6. Now let's add these two. So it's 5
7, 9, 9, 6. So here children, the answer will be 69,975. So this is the answer. Similarly, let's do this C part. 2, 9, 3, 6 multiplied by 98. So children, when we multiply this number with 8, the answer came 23,480. Similarly, जब हमने 9 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई किया, so the answer came 26,424. और जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, so the answer came 2,87,720. So let's write down this answer here. 2,87,720. So I hope this concept is clear to you. Now let's move on to the word problems. So words problem pe rest questions you have to do on your. Let's look at the first example. The cost of a book is rupees 465 rupees. So एक book है जिसकी cost है 465 rupees. Find the cost of 24 such book. मीन्स एक की कॉस्ट दी गई है और ज्यादा की निकालनी है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सो हमने 465 को 24 से जब मल्टीप्लाई किया, सो द आंसर केम 11,160 रुपीस. सो इसीलिए जो 24 बुक्स थी उनका कॉस्ट था 11,160. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.4. सो 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो लिखा है There are 144 ball pens in a carton. So एक कार्टन है जिसमें इतने सारे पेन हैं. How much ball pens are there in 368 carton? So एक कार्टन में 144 पेन्स हैं, तो 368 कार्टन में कितने पेन होंगे? So इसके लिए क्या करेंगे, हम 368 को 144 से मल्टीप्लाई करते हैं. So let's multiply it. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सी द लुक एट द टेबल ऑफ 4. 4 से पहले हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट्स डू इट. अब हमें 4 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है. लेट्स सी. अगेन इट विल कम. अब हम 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. सो उससे पहले हम 2 0 लगा देते हैं. नाउ द आंसर विल बी. So here children, the answer came, जब हमने 4 से सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1472. अब now again we have to multiply this 4 with all these numbers. So उससे पहले हम 0 लगा देते हैं and the answer will be next. अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पहले हम लगाएंगे 2 0 and the answer will be 3 6. अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं. सो हियर द आंसर विल बी so children, these many ball pens are there in 368 cartons. So here let's write down this answer. So here the answer is 52,992. Now let's move on to the next question. Here a bag contains 98 kg wheat. एक बैग है जिसमें 98 kg wheat है. What is the weight of the wheat in 990 such bags? So यहाँ पे कहा जा रहा है 990 bags में कितना wheat होगा. तो हम 990 को 98 से multiply करते हैं. So when we multiply 8 with 0, it becomes 8.
Now let's multiply 8 with 9. So it will be, now let's multiply this 9 with. So children, this is our answer. We get 97,020 here. The answer is clear. Now let's do another question from here. Let's do this question. Question number 10. A packet contains 144 hankies. So एक पैकेट है जिसमें 144 hankies. How many hankies are there in 275 such hankies? So अब हमें क्या करना है, इसमें इसमें करना है, हमें multiply करना है, and then we have to write down the answer. So children, here our answer comes 39600. So like this children, you have to calculate the rest of the questions. Same thing you have to do that we have done in all these three word problems. आपको multiply करना है. If one is given and you have to find many, you have to multiply. So children, I hope that you have understood the chapter, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.